A great welcome to Poonam Dua literature classes. The topic of today's class is Benang. Benang, an Australian novel by Kim Scott. This is Block-5 fiction by Indigenous writer, comes under MEG 19 Australian novel. किम स्कॉट एक ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट हैं ऑफ एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन एंसेस्ट्री. Aboriginal क्या होता है that we will discuss further in the video, and he is descendant of the Noongar people of Western Australia. Although magical realism है इस नॉवल में, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिज्म के और ऑटोबायोग्राफिकल इम्पैक्ट्स भी हमें नजर आते हैं. Let us know what do we mean by the term Aboriginal, because this is going to be very useful vocabulary when we study Australian literature. Aboriginal Australians are the various indigenous people of Australian mainland and many of its islands. वहाँ पर हमेशा से रहने वाले कुछ प्रजातियों के लोग. A member of a race of people who were the first people to live in a country before any colonists or any outsider arrived. Let us talk about this writer. His first novel, True Country, was published in 1993, with an edition published in a French translation in 2005. Second novel, जिसकी हम आज बात करेंगे, Benang, won the Western Australia Premier Books Awards in 1999, the Miles Franklin Award in 2000, and the Challis RAKA Award in 2001. Benang from the Heart is a 1999 Miles Franklin Award-winning novel by Australian author Kim Scott. Kim Scott's Benang tells a story crossing generations. बहुत सारी generations की story है of Noongar family, one of the indigenous family, and the identity crisis faced by them in post-settlement Australia. The story is narrated by Harley, a product of a mixed race. It is the story about a clan called Noongars. Noongars की 4 generations की story है ये. At the same time, it is also the story of strategic and cultural survival in that time of this race amidst the discrimination and violence. What kind of discrimination all these people used to face. Harley, वो कैरेक्टर थोड़े से बाद में आएंगे. Harley talks about his aboriginal great grandmother Fanny. फेनी के साथ ये स्टोरी शुरू होती है. सैंडी 1 एंड फेनी 1 आर अ कपल जिनके बच्चे हैं सैंडी 2, हैरियट एंड डेना, और इन्हीं की फर्दर जनरेशन में हार्ले जो कि हमारे नरेटर हैं. They lived in such adversity that they had no money even to remove the dead body lying close to their home. अगर इनके घर के आसपास कोई डेड बॉडी भी आती थी तो they did not have any money to remove that dead body. So Sandy 1 and Fanny are shown to be the first couple here, and Sandy 1 makes his living as a driver delivering supplies brought by the sea. Let us talk about the daughters, Harriet and Dina. Harriet and Dina becomes partner of Daniel and Pat Coleman respectively and settle in Gabelup. Gabelup में settle हो जाती हैं. Gabelup, the action of Benang is mainly set in Gabelup, an imaginary country town, while the historical context ranges from the mid-19th to mid-20th century. Its West Australian historical context is one of the brutal colonization. Colonization ने किस तरीके से Aboriginal लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, that is what the story is about. So I was telling you, Harriet marries Daniel and Dina marries Pat Coleman, and they do have a son Will and a number of girls, and Dina and Pat have Kathleen and Jack Chettalong. Once Dina is found raped and found almost dead on the sea beach, and Kathleen and Jack Chettalong are taken care by Harriet and Daniel. They are brought up in the compound of Daniel and Harriet in Gabelup itself. When Dina is left after rape, she is found by Sandy 1 and Fanny.
अब टाउन में नए नए वाइट सेटलर्स आ गए एंड दे डू नॉट टॉलरेट द नॉर्मल लोकल पीपल। नूंगर स्पेसिफिकली, ये पूरी फैमिली नूंगर फैमिली है। नूंगर्स को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता। दे आर टॉलरेटेड इन द टाउन ओनली इफ दे कीप आउट ऑफ साइट, नजर से दूर रहे तो। एंड डीना आफ्टर बीइंग रेप्ड इज सेंट ऑफ टू द reservation of Mugember, which is north of the Perth, so hundreds of kilometers away. White settlers rape and massacre a large part of indigenous population in Gabelup. White settlers का यही काम था. They start finding the girls in this Gabelup setting and they start raping them. Now enters a new character, Ernest Scott. At this point of time, the story is set in 20th century. Ernest Solomon Scott, this was the full name, migrates to this place from Scotland and brings along with him the complex of racial superiority in being white. This person feels that he is white. This complex gets authorized in his stern adherence of absorbing the aboriginals and constant efforts at breeding out the color. इनका कांस्टेंट ये एफर्ट रहता है कि एक ना एक क्लैन, एक ना एक जनरेशन में ऐसी पैदा करूं जो कंप्लीटली देखने से ही किसी को ऐसा लगे कि वाइट पर्सन है. सो आई शुड बी द वन हु शुड बी द एंसेस्टर ऑफ अ परफेक्टली वाइट पर्सन. और वही वाइट पर्सन जो है वो है हार्ले, जो कि हमारी स्टोरी के नरेटर हैं. विद द बर्थ ऑफ हार्ले, द थर्ड जनरेशन ऑफ अर्न, Earn believes that he is successful in breeding someone who is white. This person, Ernest, takes Kathleen as his wife but also has many other indigenous girls with whom he had physical relationship. They acted as a servant and were periodically moved along as they got pregnant. This is the family tree of Ernest. Ernest, Kate, then Tommy and Eileen, and then हार्ली द नरेटर, जिसको वाइट बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. अर्नेस्ट को एक पैशन है कि वो या तो वाइट कहलाए या उनकी फर्दर क्लैन वाइट कहलाए या उनकी वाइफ वाइट कहलाए. टॉप्सी को वो कम्प्लीटली वाइट बनने के लिए बोलते रहते हैं, ऑल्दो वाइट बनना इज बाय ऑरिजिन. कि किस तरीके से सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है, इंग्लिश की तरह ड्रेसअप करना, इंग्लिश पीपल की तरह. एंड ही इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन हिज थॉट्स दैट टॉप्सी इज इन इंग्लिश वुमेन. और चाहते हैं कि जो भी फर्दर क्लैन पैदा हो उसको एक इंग्लिश पर्सन का स्टेटस मिल जाए, फर्स्ट वाइट पर्सन का स्टेटस मिल जाए, दैट इज इनफ. देन टॉमी इज बॉर्न, लेकिन टॉमी को एज पर द लॉ फर्स्ट वाइट मैन का स्टेटस नहीं मिल पाता है. Out of frustration, Scat is all set to turn Topsy fully white. टॉप्सी को ही फुली वाइट करने की कोशिश में लग जाते हैं. आस्क हर टू टेक बाथ इन ब्लीच्ड हॉट वाटर, जिससे कि वो देखने में वाइट लगे. दिस कंप्लीटली शैटर्स टॉप्सीज आइडेंटिटी. पूरे नॉवेल में एक ही पर्सन है जिनको कि एबोरिजिनल क्लैन से बिलोंग करने में कोई परेशानी नहीं है, एंड दैट पर्सन इज फेनी. The one character that remains unfallingly strong and holds to her aboriginality in the text is Fanny. Fanny, her original name is Benang. She forms the primary source of Noongar information for Harley. हार्ली जो कि यहाँ की एक बहुत ही फर्दर जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है नूंगर क्लैन की, उसको फैनी ही अपडेट करती हैं अबाउट दी ओरिजिनलिटीज, अबाउट दी कस्टम्स, अबाउट दी रिचुअल्स ऑफ नूंगर क्लैन. अल्टीमेटली हार्ली को फर्स्ट वाइट मैन का स्टेटस मिल जाता है, बट Harley refuses to accept that bestowed status of being a white boy and goes on to unfurl his नूंगर हिस्ट्री. हार्ली को अपनी नूंगर हिस्ट्री में, नूंगर एबोरिजिनलिटी में बहुत ज़्यादा फेथ है. ही फाइंड्स आउट हाउ द नूंगर्स वर ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड एंड विक्टिमाइज्ड. हेंस Benang, this person Fanny, becomes the source of victimization of the Noongars of four generation, and at the same time it is also the story of strategic and cultural survival of the race amidst the discrimination and वायलेंस. किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के बीच में भी नूंगर फैमिली ने, नूंगर क्लैन ने एग्जिस्ट किया.
In the end, when Harley is born, the story comes to a full circle. We circle back to the beginning of Fanny. Fanny Benang Mason saw her people fall, saw them trembling, saw them being nervous, saw them darting glances all about them. फैनी ने देखा कि उनके लोग अपने बारे में इतना लो क्यों फील करते हैं and some became swollen, some felt themselves burning up. So she tells to Harley all about the history and victimization of these Noongar people. So Benang is about the survival of 4 generations of people, or perhaps even more than that, in the face of colonization, biological absorption, assimilation, cultural annihilation. The act of rewriting history from the Noongar's point of view and thereby recalling the story is what Benang is all about. Further, to give a post-colonial stance to the story, Scott employs allegory, magical realism and irony as various narrative tools. एक तरीके से एक क्लैन की 4th जनरेशन के बच्चे का धीरे धीरे एक वाइट पर्सन बन जाना अपने आप में एक मैजिकल रियलिज्म ही है एंड दिस पर्सन इज गिवन द स्टेटस ऑफ वाइट टू. A great best of luck from my side for your upcoming exam. Thanks for watching. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may join the classes to cover the topics in detail. Can click the link in description to get connected to us for admission. Once again, best of luck और मुझे comments में ज़रूर बताइए कि आपको ये video कैसा लगा. And after the exam, I'll upload the question paper too. Please do tell me कि question paper कैसा था.